Hello, good morning everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, welcome to your second year now. We are in the second year now. So, no doubt your formal welcome and all will be done by our HOD ma'am. But now I will show you the whatever the syllabus for your second year. So, how to search it? First, you have to go to the university page, right? In there, you can select the first one also and the second one also. There are two websites of our university. The first one is SU Digital University. Second one is www.sus.ac.in. Okay. Actually, I am familiar with the first one, so that's why I am selecting that one. And in the top, you can see this BOS syllabus circular. So you can select on the syllabus, and then you can go for the syllabus whatever you have for the second year. Okay, so here you can see the new syllabus 2021, new syllabus 2021, CBCS, new syllabus 2019-20, like this. So first let us check where is our syllabus. Is the screen visible to everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So here you can see this is a syllabus of Faculty of Science, but here we don't have our syllabus. Let us, okay, Science Postgraduate is there. We can see here. It is from 21 20, with effect from 2021 to 22. Right? So this you can download MSc2 Mathematics syllabus with effect from 2021-22. That is this year. Right? So you can keep it in your download. You can keep it in your mobile phone also. Whenever you need, you can see this. Okay, let us first check what is a syllabus. This is what MSc Part 2, Semester 3 and 4 syllabus and choice-based credit system. Why it is called choice-based credit system? Because you have the choice to select the one paper from outside of mathematics. मतलब आपका जो subject है उसको छोड़ के आप कोई दूसरा paper select कर सकते हैं, right? So here it is in detail given what is a semester pattern is there and the syllabus is for MSc students, strength of the student, eligibility, everything is given. Okay, so you can go through this one. Totally you have to appear for 2500 marks and out of which you have already appeared for half of them. Now you have to go for the next paper and the first one in our second year, that is in the third semester, we are going to see the papers like first one is HCT 3.1 means HCT in the sense hardcore paper, you cannot change this one. And HCT 3.2, 3 in the sense it is for semester 3, point 1 means the semester 3 is first paper. Okay. And you know the pattern, it is 80-20, that means 20 marks are for internal and 80 marks is for the theory. Okay. So first is a functional analysis, second is advanced discrete mathematics. So actually in the functional analysis, you are going to see the Banach space and Hilbert space. In the advanced discrete mathematics, you are going to see graph theory, combinatorics, lattice, and in the linear algebra, you are going to see linear functionals, inner product space. And the next one that is SCT 3.1, that means soft core, in which we are going to provide you the two papers of mathematics. In this also you have a choice, but actually
due to the shortage of the teacher available here. So we are not going to give you a choice. No doubt you can select a fuzzy mathematics, but no one is going to teach you. You have to prepare it your own. So that's why we are in the SCT 3.1 we are going to consider the paper of differential geometry, and the next one is OET, that is open elective paper. Here these papers are related to that means the paper which we are going to teach. Okay. So now if you want to select the paper of OET, you can go for the syllabus of statistics, MSc Computer Science, and MCA, and then you can select the paper which you want. वहाँ पे जो उनके OET के अंदर पेपर्स होंगे उसमें से आपको सिलेक्ट करना है. ओके, आर यू गेटिंग मी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so here numerical technique means what? This is a paper we are going to offer to other student like statistics, computer science, MCA, and all other students. Okay. The next one is HCP 3.1. That is, it is based on the Scilab. Okay. In the last one we have seen one software that is a latex. I hope everyone is very familiar with the latex. Yes, ma'am. At Yes, ma'am. least you can do some of the things in the latex. Completely unknown tak nahi hai, right? So you can do some of the things in the latex. You can do the presentations in the latex, like a beamer presentation it is called. And here in the next semester, that is in the third semester, we are going to see the Scilab, introduction of Scilab, and the OEP 3.1 and OEP 3.2 means whatever the practical based on your OEP. And again we have a seminar, but due to your uh, poor representation of a seminar, might be this time we are not going to conduct the seminar. It may be one tutorial we are going to conduct, or then you can appear for the test like that. In the fourth semester you have the paper of major and integration, PDE, integral equation, operation research, and these are SCT paper, that is soft core. That means the papers of mathematics which you can select, but out of them we are going to take the numerical analysis. Even you can select the probability theory, as it is a paper conducted by your statistics department. Next is HCP 4.1. Again, this one is a paper completely practical based on the Scilab, advanced Scilab. And the fourth one, that is a practical aid, is a project work. This project work means what? We are going to give you some of the topics. We are going to prepare the groups. Rather, we will allow you to prepare the group. आपके फ्रेंड सर्कल का चार चार का ग्रुप बनाना है आपको, और उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट का टॉपिक दिया जाएगा. उस पर आपको नियर अबाउट 40 पेजेस, टाइपिंग के 40 पेजेस, नॉट द नोटबुक. ओके. So you have to prepare one project. It's just like a small research. Okay, अपने MSc के लेवल पे जितना रिसर्च हो सकता है उसके हिसाब से आपको एक प्रोजेक्ट करना है. That is on the fourth semester, no doubt. And again you have a seminar. Okay, so this is what the things they have been provided, that how the distribution of marks is there. Um, Here you can see 100 marks paper is 80 marks, and 20 this is a contribution, and practical paper is of 50 marks, out of which 40 marks are to the theory exam and 10 marks for the internal assessment, right? So here you can start with the syllabus. The first one is a functional analysis, the next is ADM, the next one is linear algebra, and this is SAT 4.3.1. This I am going to teach you in this semester, that is a differential geometry paper. The next one is a fuzzy mathematics, which is optional for differential geometry. This is not for you people. It is a paper we are going to offer. And you can see here the syllabus for our Scilab. We have to first see how to download Scilab and what is the interface for the Scilab, how it consoles, how to calculate the things, and how to download these, and some of the things like how to type a matrices. These type of a thing we are going to see in the Scilab. Okay. The next is a fourth semester paper, that is this one, major integration, PDE, integral equation, operation research, numerical analysis.
This is optional one, lattice and probability theory, and the next is advanced Scilab. Okay, so combinedly we have this 2 semester. And one thing I want to tell you for you people that suppose if you are thinking that your score is less, no doubt due to our uh, online examination your score are much more better, but if you want to score more, you can concentrate on your fourth semester, because in the fourth semester you have PD, integral equation, operation reason and numerical analysis, the 4 पेपर अप्लाइड पेपर. यहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करना है. अगर आपका अच्छा से प्रैक्टिस है एग्जाम्पल सॉल्व करने का तो you can have a much more score here. Only the major and integration is a theory paper in the fourth semester. Otherwise, all remaining papers are the uh, oriented to our application. It's like you have to solve the examples and all. Okay. Any doubt for this syllabus? No, ma'am. Yes. Anyone can ask the question. Hello. आहेत का doubt काय? No. Okay. Those who मॅम are ते late comer, you can just download हॅलो the. Yes. मॅम ते प्रोजेक्ट ग्रुपमध्येच करायचं इंडिव्हिज्युअली नाही आहे का? No, no, it is not allowed for individual. You have to do it on a group, because it will create you the leadership quality and work in a group. Because in whenever you are going to uh, go for a job, or if you are going to start your own business, you have to work with peoples, right? So you have to be very cooperative with the peoples, and you will understand how to react with the people. Okay. येस So मॅम this ठीक is आहे. what just like how to work in a team. Teamwork का एक example है. I hope no one has a doubt, because this is what the structure you have already seen in your MSc first year. Okay. I hope everyone is doing the assignment of Swayam. झालेत का सगळ्यांचे सबमिट? Hello. येस मॅम. Okay. So now I will come to my paper. You can see the name of a paper is a differential geometry. This is a combination of 2 paper, that is geometry and the differential equation. Okay. So here we are going to study the geometry, the shapes of the object or anything which is there in the 3D or 2D space with the help of a differential equations. Okay. In short, I will give you one example. Suppose you want to travel, suppose from university to stand, or stand to university, maybe anyone from there, or from your home to university, or from your village to university. So, anyone who is going to travel, they will have a some pre-planned uh, executives. No, just like you are going to plan. हाँ, tomorrow I want to go to university. Either form to form वगैरह submit करना है ना. So you are going to plan this now. Suppose the bus is at 10 a.m. So you are going to plan it, and you will leave the home at 9:30 or 9, whichever will be convenient. To reach to the stand, and then you sit in a bus and then come to the university, and you're going to calculate the time, that this much amount of a time I will need from my home to come to the university for submission of the exam form or anything else. So can anyone tell me how you have calculated the time? मुझे इतना टाइम लगेगा इस गांव से यूनिवर्सिटी तक आने के लिए. How you have calculated the time? Suppose there is nothing in the world like speed and all, so how you are going to calculate the time? Or assume that you have a criteria for speed. Okay, so how you are going to calculate the time? First, you have to consider the distance, whatever you want to cover, and the speed. Depending on the distance and speed, you can calculate the time. So, what is the formula for the speed?
distance upon time, right? So if you're knowing the distance or if you're knowing the time, distance or time अगर पता होगा तो speed निकाल सकते हो, but speed is not in your hand, right? Because बस का जो ड्राइवर होगा उसके हाथ में स्पीड है, right? So you are knowing now the speed as well as the distance, so you can calculate the time. Is it okay? Yes. Okay, so Yes, ma'am. whatever assume we have assumed, suppose you are a particle and a particle is traveling from, suppose the village is Pandharpur and a person is traveling from Pandharpur to Solapur University. So minimum we can consider 1 or 1.5 hour we require depending on the speed. अगर आप खुद से बाइक पे आ रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो नियर अबाउट 1 to 1.5 hour में आप पहुंच सकते हो यूनिवर्सिटी, राइट? So how you have calculated this time is first you know the speed of your bike or the bus and then you know the distance, okay, and then you can calculate the time. Or if you're not knowing the distance, so what you have to do, you have to calculate the speed as well as the time you require. आप घर सपोज आप घर से यूनिवर्सिटी को बाइक पे आ रहे हो तो आप एक टाइमर स्टार्ट करो टाइम एंड देन द स्पीड यू ट्रैवल, कांस्टेंट नहीं होगा स्पीड आपका, बट यू कैन कैलकुलेट द एवरेज. मे बी यू आर कमिंग with the speed of 40 or 50, so you can calculate the whatever the distance you have covered. Is it okay? So Yes, what I ma'am. want to tell is here the concept of a geometry we have studied with the help of our speed. Speed is nothing but the rate of change, and the rate of change is related to differential equation. So the concept or the कर्व ही हुआ ना, अगर आप यहाँ से कुछ ट्रैवल कर रहे हो, so whatever the path traveled by yourself on your bike to the university, that is also one curve, right? So we are going to study that curve with the help of a differential equation, that is rate of change. Okay, rate of change is nothing but the speed. Okay, ds by dt लिहितो ना आपण स्पीडचा फॉर्म्युला, Yes, ma'am. right? The formula for speed is equal to ds by dt. So this is what the things we have in the differential geometry. We are going to study the concept of the geometry with the help of a differential equation. Here we have some directional derivative, then finite formulas and the calculus on the surface. In the first two unit we are going to concentrate on the curve, and the next two unit we are going to concentrate on the surface. And here we are going to define actually what is a surface, because up to now we don't know what is the definition for the surface. Okay, and then we will see what is a tangent, normal on the surface. And the recommended book for this one is O'Neill B. Elementary Differential Geometry. This is a book given for you for recommendations. That is O'Neill B. And the other reference books are also there, but I suggest to follow the O'Neill B because many of the figure, geometric interpretation, and in detail description, each and some of the examples are solved and theorems are also given in detail. So you can refer the book O'Neill B. Differential Geometry. I will give you the PDF of this book, and in the last pages of this PDF, you can see the solution of the examples given in the exercise. उसने exercise के example का भी solution provide किया है. Okay. Many of the books is not having this type of a consideration, right? So you can also search elementary differential geometry by O'Neill B. You can get the PDF online yourself, and I am also going to share this in which initially you have the book and in the last pages you have the solution of all the exercises whichever provided after each chapter. Okay. Any doubt for this one now? No, ma'am. Okay. So whatever we are going to need in the basic parts of the differential geometry,
we will see. The first one, I want to ask you about the thing that whether you know what is a line, straight, and whether there is a difference between line and straight line, how to define a curve, what is a circle, how to define a circle or sphere. These are the things. That means we are going to study the geometry, so that's why I'm asking what is a circle, what is a definition for the circle, definition for the surface, definition for the sphere, then what is a line in a 2D plane, how to define a line in a 3D plane, 3D space. So these are the things which I want to know from you people. Okay? Yes, everyone will download this from the website itself. Yes, can anyone tell me the definition of the sphere or the definition of a circle, how the circle is defined? Yes, how the definition of a circle is defined, or is there is no definition for the circle? It is a round plane figure which is a boundary of consisting the points equidistant from the center. Hmm. Okay, how the straight line is defined, or how you are going to say that this is a straight line? What are the criteria to find out this is a straight line? We must have 2 points. Simply having a 2 point is sufficient. Yes, anyone from the student, how this line is defined? Endless one-dimensional straight line. आप लाइन के डेफिनेशन में एक स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हो, राइट? डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है कि हम उसका यूज उसमें नहीं करना चाहिए. If 2 points are collinear, 2 points are the line collinear. passing through that 2 points will be straight line. A line passing through the 2 points is a straight line. Okay. So, is there any difference between the line and straight line? Every straight line is line. What about this is the reverse one? Reverse is also true, ma'am. So that's why I want to ask you ना, the line is always a straight. Straight ही होता है ना line. अगर वो Yes. straight नहीं है मतलब वो curve हो गया ना. Yes, ma'am. Okay. Uh, Now, let me ask you, what is the sphere? It is solid sphere.
Yes. What is the definition for the sphere? सगळे आहेत का? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, आता ma'am. अभ्यास करायचा आहे. You are now grown up. You are on the second year. And this is what the last stage where you are going to study. क्योंकि इसके बाद अगर किसी को पीएचडी करना है तो ही आपको स्टडी का मौका मिलेगा. एंड दैट इज ऑल्सो नॉट जस्ट लाइक एमएससी और बीएससी, बिकॉज यहाँ पे आपको अलाउड है कि आप कुछ भी पूछ सकते हो, राइट. एंड द लास्ट स्टेज ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट आई कैन से, हाँ, नो डाउट दोस हु वांट टू डू अ बीएड और डीएड, दैट इज अनदर थिंग. बट बीएड और डीएड में ये सब टीचिंग वगैरह नहीं होता है. They're just going to teach that how to teach, right? पढ़ाना कैसे ये बीएड और डीएड में सिखाया जाता है, राइट. The next thing is what here, whatever you are going to study, this is what the last stage of being a student. आप student, as a student you can ask anything wherever you are going to in their lecture or after the lectures or anything else. But after completion of this, you are not allowed to ask. Maybe you are going to go for a teaching and all. तो टीचिंग में तो आप स्टूडेंट से पूछ नहीं सकते हो. नो डाउट द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन. नो डाउट वी आर गोइंग टू हेल्प यू एनी टाइम इन योर लाइफ, जब भी आपको कोई भी डिफिकल्टी आएगा. But at that time you are going to hesitate that how to ask them, right? So this is what the last stage of being a student. Ask the question. This is what the main criteria of being a human, क्योंकि इंसानों के पास यही एक बेटर क्वालिटी है कि हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट. आई होप एवरीवन इज नो रिमेम्बरिंग द थिंग दैट, और रादर अगर आपका खुद का बचपन याद नहीं है तो एटलीस्ट यू कैन सी योर the childrens which are there in your home, they are going to ask you the question. आप अगर उनको किसी चीज के लिए रोकते हो तो definitely they are going to cross the question, right? So if you say this, you should not do this, so they are going to ask you why we should not do this, right? They are not going to assume it as it is. So this is what the main quality ऑफ बीइंग अ ह्यूमन, राइट. यही एक क्वालिटी है जो हमको सारे दूसरे लोगों से दूसरे जो भी लिविंग थिंग्स है यहाँ पे उनसे डिफरेंशिएट करता है, राइट. सो हैव अ हैबिट टू आस्क द क्वेश्चंस सो दैट योर नॉलेज विल बी इंक्रीज्ड. और ऐसे मत करो कि पूछना है मतलब पूछो मत. हाँ, no doubt the definition, suppose you have some definition, you cannot have a question mark on the definition. You can think on that how the definition is defined like this only, what are the concept of a definition, how it is applied for the example, like this. uh, as if you are knowing the definition of continuity. Continuity का, uniform continuity का definition सबको पता है. But whether everyone have gone for the example, have you found the delta and epsilon depending on that? And if you have found, then only you have understood the definition. Unless otherwise, you cannot understood the definition. Knowing the delta and epsilon, simply it is told that delta and epsilon are greater than 0. Actually, कैसे calculate करते हैं आप delta और epsilon? That is not known to us. So that is called a complete study of a paper. Have a habit to ask the questions every time. Okay. Just I want to ask you, as if you are in the second year, I hope you have planned something for your future. केलेत का? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. If everyone have done this, so out of all these, only 2 students say that yes, ma'am.
But whether what about the other one? Whether you haven't planned, or is there anything else after doing MSc you are going to plan? नो मॅम आत्ताच केलंय. अच्छा, आत्ताच केलेत का? Okay. Uh, the one thing I want to ask you, what is the scope after doing an MSc mathematics? Hmm. अगर किसी ने अभी भी प्लान नहीं किया है तो आप भी टाइम नहीं गया, राइट? यू हैव 1 ईयर. ओके, ऐसे बोलने में बहुत बड़ा लगता है कि 1 ईयर है, बट जैसे जैसे एक दिन चला जाता है तो यू विल फील यू हैव टू रिग्रेट इन योरसेल्फ. एक दिन पूरा खत्म होने के बाद बेड पे जाने से पहले आपको सोचना है कि हमने ये दिन में क्या किया है. एटलीस्ट यू शुड फील दैट हाँ, इस दिन मैंने कुछ सीखा ही नहीं है, राइट? मैंने खुद को इनोवेट ही नहीं किया है, राइट? एवरी डे यू हैव टू इनोवेट योरसेल्फ. एटलीस्ट एक ऐसी चीज आपको फाइंड आउट करनी है जो आपको पता ही नहीं है, राइट? यू कैन गो फॉर द जनरल नॉलेज, राइट? ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको मैथ्स ही पढ़ना है. यू कैन गो फॉर द जनरल नॉलेज, और यू कैन गो फॉर द थिंग्स लाइक यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द IBPS एग्जाम, SSC स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं, that is very equivalent to our exams of IAS, IPS, these type of exam. ओके, हमें ये पता है कि IAS ही सबसे हाईएस्ट पोस्ट है, राइट? जब भी आप यूपीएससी की एग्जाम देते हो, IAS इज नो डाउट द हाईएस्ट वन, बट मोर बेनिफिट्स आर देयर फॉर IFS, that is Indian Foreign Service. The next come that about the IPS, and after that again 48 posts are there about the UPSC, and even you can go for MPSC. क्योंकि सभी का मराठी बैकग्राउंड है तो सभी मोस्टली जो कोचिंग वगैरह है मराठी में है अपने महाराष्ट्र में. सो यू कैन हैव द थिंग्स कि आपको जो भी मराठी में अवेलेबल बुक्स वगैरह है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो. MPSC, UPSC ऑल, राइट? आपके पास अभी टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है अभी. अभी हम लोग जॉब पर लगने के बाद यहाँ पे आधे से ज्यादा दिन चला जाता है, राइट? एंड वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दिस टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो वी आर telling you from our experience that you should utilize this year to at least set the goals, and goal ऐसे set करो कि आपको जॉब लगना चाहिए, right? Or if you don't want to be a job seeker and all, you can start your business on your own. What you have to do for that, you have to just go to Mahanagar Palika before starting your business. First you have to go there and you have to inquire about the things that आप जब भी बिजनेस कोई स्टार्ट करते हो उसका एक GST मिलता है और रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है. Then only you are going to get some of the loans from your government, that is Mudra Yojana. And Mudra Yojana is mostly given for the ladies. जो भी ladies 8th पास है उनको मुद्रा योजना से लोन मिलता है, and that is on the 3 categories. The first one is Shishu, then next one I don't remember the name. There are 3 stages. In the Shishu one, you are going to get a loan of near about 50,000. आपको 50,000 का लोन गवर्नमेंट देगी, और अगर आप उस लोन को विदाउट एनी डिले अगर आप पे करते हो तो आप नेक्स्ट लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको 1 लाख से 10 लाख का लोन मिल सकता है. And the third level in which you can get a loan of 1 crore to 10 crore. Okay. So these are the stages you can apply for the loan, and if you fill up the loan, आपने सभी लोन अगर टाइम पे फिल अप किया है तो आप नेक्स्ट लेवल्स पे भी जा सकते हो. ओके, सो यू हैव टू सेट अप योर ओन बिजनेस. देयर आर सो मेनी वेज टू सेट अप अ बिजनेस. अगर आपको ऐसे लगता है कि बिजनेस ना बहुत मुश्किल है, नो डाउट इट इज डिफिकल्ट, बट इट बिजनेस इज हैविंग इट्स ओन टाइम. बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करते हो वो एक अपना खुद का टाइम लेता है ग्रो करने के लिए, लाइक 3 to 4 years or 5 years. These are the time required for your business to start and to grow. Just like the thing, अगर आपके एरिया में कोई एक नया शॉप ओपन होता है and you have your another one which is there from
4 to 5 years. So no doubt you are going to prepare that shop. Correct, no? पहले वाले शॉप पे ही Yes, जाओगे ma'am. ना. सपोज एक किराना स्टोर है वहां पे आपको. So these type of things happen, but the business need your own time to grow. Okay, ऐसे नहीं करना है कि एक साल में नहीं चला तो बंद करना है. You have to plan a strategy. आपको होम डिलीवरी के लिए अप्लाई करना है या फिर होम डिलीवरी का अगर फैसिलिटी आप देते हो, ऑनलाइन शॉपिंग का फैसिलिटी, गूगल पे, फोन पे, दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू आर गोइंग टू इंक्लूड. दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर द योर कस्टमर्स. ओके, सी, आप ऐसे बोल रहे होगे कि एमएससी करके मैडम हमको बिजनेस करने के लिए बोल रहे हैं. दिस इज नॉट द थिंग. ओके, मैथमेटिक्स पर्सन कैन सर्वाइव एनीवेयर. ओके, क्योंकि अगर आप कंपनीज में भी देखोगे तो वो लोग उसी पर्सन को लेते हो जिसका लॉजिक अच्छा है, राइट. एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट से अच्छा लॉजिक किसी का भी नहीं हो सकता है. करेक्ट, Yes, नो? ma'am. Yes, ma'am. आपने आपके घर पे भी ऑब्जर्व किया होगा. सपोज देर इज सम प्रॉब्लम इन योर होम. आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द पर्सनल प्रॉब्लम. सपोज ऐसा कुछ हुआ है, जस्ट लाइक द प्रॉब्लम ऑफ वाटर, मे बी द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सम other things. So the logical examples or the logical thinking is developed in ourselves only. और हम ही लोगों को बताते हो कि ये प्रॉब्लम का इस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है, राइट. एंड मोस्टली इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल इज, मैथमेटिक्स के लोग का जितना लॉजिक स्ट्रांग होता है, ये लोग स्टॉक मार्केट में ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं, राइट. बिकॉज वी हैव अ प्रेडिक्शन. प्रेडिक्शन हम आसानी से कर सकते हैं. जितना हमारे पास डेटा होगा उस डेटा के हिसाब से हम नेक्स्ट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, राइट, नो. So you can start, you can go for the jobs in the stock market. पता है सबको स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, मनी मार्केट. Yes, anyone knowing this one? The jobs related to stock market? No, ma'am. Okay, just I want to ask you whether you have seen that Harshad Mehta story. वेब सीरीज देखा है क्या सबने हर्षद मेहता का? Yes, ma'am. नहीं मैम. Okay, I hope everyone at least seen that movie Big Bull, Abhishek Bachchan ka. So actually the story is depending on the life of a Harshad Mehta. ऐसे वेब सीरीज देखना चाहिए. No doubt every time I am telling you that don't waste your time on the social media, but some of the things are there which are positive. You have to take it from there. And I hope everyone has studied about, और कुछ तो सुना होगा इलॉन मस्क के बारे में. Whether you know Elon Musk? Yes, ma'am. Who is Yes, this? ma'am. Elon Musk पता है कौन है? CEO है मैम, ये इतना ही सुना. He is not a CEO. He have his own 5 companies. हाँ, CEO था वो, बट टेस्ला का बिफोर 5 ईयर, मतलब लॉकडाउन के पहले वो CEO था, बट उसने बाद में टेस्ला कंपनी को खुद से ही परचेस कर लिया. Yes, ma'am. एक्चुअली बिफोर लॉकडाउन ही उसका जो नेट वर्थ था वो बहुत कम था, और इट वाज आफ्टर दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में वो कुछ 50 के आसपास था. बट आफ्टर लॉकडाउन Yes, ma'am. हाँ, ही इज द लार्जेस्ट, वी कैन से द नंबर 1 इन जो अमीरों का लिस्ट में, पूरी दुनिया के अमीरों के लिस्ट में ही इज ऑन द नंबर 1. ही हैज हिज Yes, ओन ma'am. 5 This news I कंपनी. have heard. Yes. This news I have heard. Oh, yes, I yes. don't know exactly who is Elon Musk, but this news I know. हाँ, राइट. एक्चुअली हमने सोचा कि लॉकडाउन में कोई कमाएगा नहीं, बट ही हैज बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन. व्हाई दिस इज सो? बिकॉज ऑफ द हिज कंपनी टेस्ला. एक्चुअली टेस्ला उसका खुद का कंपनी नहीं था, उन्होंने वो कंपनी किसी से बोरो किया है जब वो कंपनी डूब रही थी, राइट.
डूबती हुई कंपनी को खरीदने का के लिए बहुत गट्स की जरूरत है, राइट? एंड दैट इज ऑल्सो गिविंग $10 million कि दे के खुद डूबती हुई कंपनी को खरीदना और उसके बाद उस कंपनी को रिनोवेट करना, राइट? इलॉन मस्क इज ऑल्सो टेलिंग यू दैट इलॉन मस्क हमेशा ये बोलते हैं कि एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर डूइंग अ जॉब इन हिज कंपनी। उनके जो 5 कंपनी है वो एजुकेशन के बेसिस पे वो जॉब नहीं देते। अगर आपके पास स्किल है तो आपको इलॉन मस्क की कंपनी में जॉब मिल सकता है, right? Every time he is telling this, and even he has started his own school जहाँ पे स्कूल में बच्चों को ये सब सब्जेक्ट नहीं है, मराठी, हिंदी और लैंग्वेजेस एंड ऑल। वहाँ पे सिर्फ 3 बेसिक सब्जेक्ट है। द फर्स्ट वन इज इंजीनियरिंग, द सेकेंड वन स्किल डेवलपमेंट, दैट मीन्स जो भी स्किल related to the things, it is hardware or anything else, and the next one is English or the things which is related to जहाँ पे आपका स्कूल होगा वहाँ पे maths or science. Okay, maths, science, and the engineering. These are the main subject, and the other are not main subject. Okay. So you can think the thinking of Elon Musk that the engineering subject he has introduces in his school. और हम engineering कहाँ पे सीखते हैं? After completion of a 12th. Correct, no? Yes, ma'am. So this is what the thinking. Why I am giving the example of himself, because he has purchased the company Tesla, and due to the company Tesla itself, जो डूबती हुई कंपनी को उन्होंने खरीदा उसकी वजह से ही वो आज नंबर 1 पे है। बिकॉज उन्होंने एक कार मतलब कार लॉन्च किया है जो पेट्रोल और डीजल पे नहीं चलता है। नो डाउट यू आर नाउ observing what are the rates of petrol and diesel, so everyone no doubt going to shift to other sources, correct, no? Yes, ma'am. So that is what the guts he has. टेस्ला कंपनी जो डूब रही थी उसको खरीद के उन्होंने अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जहाँ पे उस कंपनी की वजह से वो हाईएस्ट पोजीशन पे, राइट? तो यहाँ तो हमको बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं करना है। नो डाउट यू हैव टू स्टार्ट विद द वेरी स्मॉल बिजनेस। अभी जो एग्जांपल मैं देने जाऊंगी उसके लिए आप लोग हंसोगे, बट this is the real one I have considered. Everyone has visited the beauty parlor, Yes, ma'am. मेंस पार्लर। बचपन में हम मेंस पार्लर पे ही जाके कट करते थे ना, एटलीस्ट मी। Yes, Yes, ma'am. yes, हाँ, ma'am. सो मेंस पार्लर में कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है। आपको बिजनेस के सेटअप के लिए ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, 2-3 चेयर चाहिए और जो भी कटर वगैरह जो भी लगता है, कंघी एंड ऑल दोस, सीजर एंड ऑल, इतना ही लगता है ना स्टार्टअप के लिए, करेक्ट नो? Yes, ma'am. और अगर आप शिशु योजना के लिए अप्लाई कर रहे हो, मुद्रा की शिशु योजना के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 50,000 सफिशिएंट है उस काम के लिए। 2-3 चेयर चाहिए, थोड़ा सा सेटअप, मिरर एंड ऑल, एंड दैट इज व्हाट द सेटअप, करेक्ट? और आज का रेट अगर आपके भाइयों को आप पूछोगे, आपके ब्रदर्स या आपके डैड को, so you can ask them that what is the rate, actual rate, whether you have heard the rate. हाँ, हेयर कटिंग के लिए 100 रुपीज ले रहे, वो भी मेंस के लिए, नॉट अबाउट द लेडीज। हाँ, नो डाउट लेडीज के लिए थोड़ा सा स्टार्टअप के लिए ज्यादा पैसे लगेंगे, बट नो डाउट फॉर द जेंट्स इट रिक्वायर नॉट मच मोर मनी। सो 100 रुपीज और 120 नियर अबाउट दिस इज द रेट। और आपको स्टार्टअप में सिर्फ नियर अबाउट 50,000 आपको इन्वेस्ट करना है, और यू आर गोइंग टू अर्न इट विदाउट इन्वेस्टमेंट। हाँ, अगर आप किराना शॉप लगाते हो तो आपको एवरी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड लाइफ टाइम यू कैन अर्न। ओके, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप खुद से ही करना है। यू कैन गो फॉर, जिसको आता है उसको आप काम पे रख सकते हो, एंड यू कैन हैव अ प्रॉफिट लाइक 50-50%। ओके, and the next one is you can grow your own farm. Farming is also one good business. The next one
You can consider the business which you can start in your home itself. Manufacturing, no doubt not a manufacturing, you can start the business of clothing तो अभी mostly सब लोग कर रहे हैं, right? These are the some of the examples that I have given. These examples I have observed from my surrounding. क्योंकि लॉकडाउन में ऐसा हो गया था कि नाई की दुकान भी बंद था, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो गया था, राइट ना? Yes, ma'am. इन चीजों से ही आपको सीखना है कि इसको एज अ पार्ट ऑफ अ जॉब कंसिडर मत करो, क्योंकि जो आपकी सराउंडिंग में होता है उसी से आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट? क्योंकि नाउ डेज टू गेट अ जॉब एंड टू सेटल इन अ जॉब इज नॉट अ इजी वन. नो डाउट यू आर नोइंग द सिचुएशन नाउ. अगर आप एमएससी सेट नेट होने के बाद में भी जॉब है, इसका कोई गारंटी नहीं. यू कैन गो फॉर एनी अदर. अगर आपको जॉब ही करना है तो ऐसे जॉब करो कि एमपीएससी यूपीएससी के लिए अप्लाई करो, टाइम दे दो वहाँ पे और जॉब करो. अदरवाइज यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. गवर्नमेंट आपको लोन दे रही है स्पेशली फॉर गर्ल्स. गर्ल्स का जो भी लोन है वो जल्दी अप्रूव होता है, बट यू शुड हैव द रजिस्ट्रेशन एंड ऑल. आपका पहले से रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए महानगर पालिका में. नो डाउट इट रिक्वायर अ टाइम, बट वंस यू स्टार्ट, अगर आप लोन क्लियर करते जाओगे तो आपको स्टेप्स आगे के स्टेप्स में भी मिलेगा, राइट? सो आई जस्ट वांट टू से दैट यू हैव टू सेट अप योर गोल्स, ओके? अगर आपको जॉब ही करना है तो आपको उस टाइप के गोल सेटअप करना चाहिए कि हाँ, in these 2 years I have to do this and I have to get a job. And if you want to start a business, you have to give a more time for the business because it needs its own time for growth, right? I hope anyone knowing about the Reliance company, Ambani, सबको पता है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, हाँ. ma'am. uh, अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी. No, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. Bye bye. हाँ भाई है. ओके, धीरूभाई अंबानी was his But one is zero and one is. yeah, right. One you are knowing, one is on the zero and one is on the highest level. Why this is so? Because actually जब उनका पार्टीशन हो गया था, जब वो सेपरेट हो गए थे, तो ज्यादा जो अमाउंट था वो अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी के पास था. Who is now richest one? हाँ, Mukesh Ambani. मुकेश अंबानी के पास ज्यादा था या कम था जब उनका सेपरेट होने के बाद? Okay, you have to do this. I will tell you this only the thing that जब उन दोनों को भाइयों को उनकी मॉम ने डिवाइड करके दिया था, तो जो आज जीरो पे है उसके पास ज्यादा वर्थ था बिकॉज ऑफ द थिंग दैट ड्यू टू सम ऑफ द प्रॉब्लम एंड अभी जो रिलायंस के जियो के जो पर्सन है उन्होंने उनके पास उतना ज्यादा नहीं था, बट उन्होंने ग्रो किया. और इस जगह इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट मिलना चाहिए. ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके कोई फायदा नहीं. सपोज आपने बहुत ज्यादा पैसा अगर किसी फिल्म पे लगा दिया और फिल्म फ्लॉप गई तो आपका पैसा तो पूरी तरह डूब गया, राइट? तो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पे आपको लाइफ टाइम अर्निंग मिलना चाहिए. जस्ट लाइक आई हैव गिवन द एग्जांपल ऑफ अ मेंस पार्लर. ओके, आपको खुद को जाके नहीं काटना है, बट यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ अ बिजनेस. और सपोज मेडिकल फील्ड इज ऑल्सो गुड. सर्जिकल का जो अपैरेटस होते हैं जब भी आपको ऑपरेशन में लगते हैं उसका भी रेट बहुत ज्यादा होता है. बट इफ यू वांट टू परचेस इन ऑन द होलसेल में अगर आप परचेस करते हो तो उसका रेट बहुत कम है. अगर आप रिटेल में परचेस करते हो तो उसका रेट बहुत हाई होता है, राइट? So these are what some of the examples you can consider to start a business. And for the job, I always tell you go for the IBPS exam or SSC exam. And if you want to be a teacher, you can go for SETNET or TET exam. TET का भी आपने देखा होगा, पता है ना TET का एग्जाम होने वाला है. हेलो. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, so you have to give these type of exam where you can get the job earlier one. क्योंकि
Just now, just tell me how many years you have studied. कितने साल स्टडी किया है आपने स्टार्टिंग फ्रॉम? 16 years. हाँ, 16-17 years आपने स्टडी किया है, इतना सफिशिएंट है ना जीने के लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Enough है. ma'am. हाँ, नो डाउट, मैं ये नहीं बोल रही कि आपका स्टडी बंद कर दो, यू हैव टू, आपको पढ़ते रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि कुछ अर्निंग नहीं करके पेरेंट्स पे डिपेंड होके पढ़ना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, राइट? बीइंग अ ग्रेजुएशन दैट इज सफिशिएंट, ग्रेजुएशन तक आपके पेरेंट्स पे डिपेंड होना या पोस्ट ग्रेजुएशन तक, दैट इज ओके। पेरेंट्स भी सोचेंगे ना कि पीजी तक इसको पढ़ाया, फिर आगे चल के भी हमको ही इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। सपोज पीएचडी आपको करना है, अगर किसी का ड्रीम है पीएचडी करना, तो डोंट डिपेंड ऑन योर पेरेंट्स, जस्ट क्लियर द नेट जेआरएफ और क्लियर द गेट एग्जाम, देन यू कैन गेट अ फेलोशिप ऑफ 35,000, और 35,000 per month is sufficient, no, for doing the research, correct, no? Hello, am I audible? So those who want to do a research, you can go for the GATE exam on NET JRF. And the main thing I want to tell you, आपको कोई भी एग्जाम अगर क्रैक करना है तो उसके प्रीवियस पेपर्स को स्टडी करो। अगर आपको आंसर की मिलता है तो सॉल्व करो, और आंसर की मैच करो, आपके आंसर मैच करना चाहिए, and go on solving more and more question papers and more sample question paper, then only you can crack that exam. थ्योरी पढ़ के कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता है, unless and otherwise it is related to a theory exam. अगर आपको MCQ टाइप का एग्जाम या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है तो आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही सॉल्व करना पड़ेगा, करेक्ट, नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जस्ट डाउनलोड दोस क्वेश्चन पेपर, स्टार्ट सॉल्विंग देम। एक बार प्रिंट आउट निकाल दो, पैसा गया तो गया, प्रिंट आउट निकाल के सॉल्व करना है, एक नोटबुक बनाना है, एंड लाइफ टाइम वो नोटबुक आपके साथ होगा। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जब भी प्रिंट आउट निकाला सेट नेट का, तब ऐसे ही सॉल्व किया, वो वैसे ही रह गया। हाँ, बट आई हैव क्लियर द सेट नेट, दैट इज अनदर थिंग। And if you want to go for PhD, start studying from now onwards. Clear your NET JRF or GET, and then you can get a fellowship, and you will not be depending on your parents. Correct? Nowadays the situation is very difficult. You don't know how the parents is earning and how they are fulfilling your wishes. Correct? No? कभी देखा है? I am not telling you about the well-to-do family, but I am asking you about the middle class. Correct, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Okay, so these are the thing I want to tell you, that you have to set up a goal. गोल सेटअप करो, एक साल के बाद आपको क्या करना है, और आप जॉब सेलेक्ट करना है, या फिर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर आपको कोई पीएचडी करना है तो आपको जेआरएफ या फिर फेलोशिप लेना पड़ेगा, then only you can do. Okay, so let me stop here, and the next lecture onwards we are going to start the some of the basic concept which we are going to need for a differential geometry. Okay, any doubt up to this one? No, ma'am. No, ma'am. Okay, so just set up your goal, don't assume that you are going to do a teaching job. Teaching job में कुछ नहीं बचा है अभी, I'm मैं खुद ही कर रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ। हाँ, this is a noble profession, बट those who really want to do this, you can do it. हमारे टाइम पे हमको पता नहीं था कि एसएससी या आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं। अगर उस वक्त पता होता तो आई थिंक आई हैव कवर्ड दैट, बट नो डाउट आई एम डूइंग नाउ पीएचडी, एंड आफ्टर दैट आई कैन गो फॉर एनीथिंग एल्स। सो जस्ट मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि आपको आपका गोल सेटअप करो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है। ओके, पीएचडी करना है तो आपको फेलोशिप पे करो, जॉब करना है तो ऐसी जॉब, ऐसा प्रोफेशन सिलेक्ट करो जैसे आईबीपीएस, एसएससी, एमपीएससी, यूपीएससी। ऐसे लगता है कि एमपीएससी यूपीएससी हार्ड है, बट इफ यू स्टार्ट करना ही हाफ एंड है, करेक्ट, and then you can go for this type of exam. Currently I want to tell you about my brother. He has completed his CA. Now he is doing his internship. After 6 month internship, he will become a CA.
So CA is also very much equivalent to UPSC type of examination. उसने गोल उसी वक्त सेट किया था, मतलब एक्चुअली आई वांट टू बी अ सीए, बट पीएससी होने के बाद मुझे पता चला कि सीए वाला भी कुछ होता है, बिकॉज माय फैमिली इज नॉट फ्रॉम मच मोर, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, सभी लोग बिजनेस वाले, तो मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं था कि सीए भी होता है, यूपीएससी भी होता है। तो बीएससी के बाद मुझे पता चला था कि सीए इज ऑल्सो अ गुड प्रोफेशन. So at that time he has completed his 10th exam. So I told him, because actually he was not having an interest in engineering as well as not in the medical. So क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग और मेडिकल दो ही जॉब सिलेक्ट करते हैं ना. So I told him that you have to do a CA. Actually he was not ready because it was a new concept for our family, because हमारी फैमिली में सब लोग बिजनेस वाले हैं, तो he was also having that mind. And then I told him to just see there whatever is there in CA. Some of the coaching institute I have decided for them. And then 10th वो जब 10th में था तभी उसको मैंने बताया, और after 10th he go for some of the seminar related to CA. पता है ना सबको CA क्या होता है? Yes. हाँ, Yes, तो ma'am. उसको मैंने बताया, और now he has completed all the exams in the first attempt, and in the district level he was the third ranker in the CPT exam. And the fine, मैं अपने भाई का पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, बट सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपको जब जब आप गोल सेट करते हो उसके बाद आपको टाइम ज़्यादा लगता है. जस्ट लाइक माई ब्रदर, ही हैज सेट अप हिज गोल एट 10th स्टैंडर्ड ओनली. 10th पास होने के बाद ही उसने ये गोल सेटअप किया, और नाउ ही इज ऑन द वे टू सीए, क्योंकि अभी नियर अबाउट उसका एज होगा 22, और आफ्टर 6 months ही विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ सीए फ्रॉम ICWA. एंड सीए के साथ साथ ही एक कंपनी सेक्रेटरी का एक जॉब होता है, वो वाला सेक्रेटरी नहीं जो हमारे टीवी सीरियल में दिखाती है, दैट इज नॉट अ कंपनी सेक्रेटरी, इट इज अ वन जॉब रिलेटेड टू very equivalent to CA, but कंपनी सेक्रेटरी मीन्स व्हाट, जो भी आपका मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वहाँ पे एक जॉब होता है कंपनी सेक्रेटरी, विच इज गोइंग टू प्लान, विच जो भी कंपनी का प्लानिंग होता है उसके हाथ में आता है, राइट. ICWA का ही के अंडर ही हो, या दो एग्जाम होते हैं, CA CS, company secretary. And after becoming a CA, you can go for a income tax officer also. इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए आपको एक एग्जाम क्रैक करना पड़ता है आफ्टर बिकमिंग सीए, दैट इज ऑल्सो अ गुड जॉब नाउ. ओके. और हमारे सीए के इक्विवेलेंट हमारे यहाँ पे मैथ्स के लिए है एक्चुरियल मैथमेटिक्स. एक्चुरियल मैथमेटिक्स एंड सीए बोथ आर इक्विवेलेंट. सीए जितना ज़्यादा अर्निंग करता है, जितना ज़्यादा पैसे कमाता है, उतना ही एक एक्चुरियल मैथमेटिशियन कर सकता है, राइट. नो डाउट इन सोलापुर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है एक्चुरियल मैथमेटिक्स, यू हैव टू गो आउटसाइड ऑफ सोलापुर if you want to be actuarial mathematician. Actually I have asked my father, because BSc होने के बाद मुझे पता चला कि CA का भी कुछ होता है एंड ऑल, क्योंकि नो डाउट अगर आपकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो ये सब चीज़ें आपको आपकी स्टडी होने के बाद ही पता चलता है. And then after MSc I have realized that there is actuarial mathematics. One ये तो वर्कशॉप वगैरह था हमारी यूनिवर्सिटी में. एट दैट टाइम आई कम टू नो अबाउट द एक्चुरियल मैथमेटिक्स, बट उस वक्त टाइम बहुत हो गया था और पेरेंट्स ने भी अलाउ नहीं किया सोलापुर से बाहर जाने के लिए. बट नाउ डेज इट इज़ ईजी फॉर यू पीपल. ऑनलाइन आप एक्चुरियल मैथमेटिक्स के क्लासेस अटेंड कर सकते हो, या फिर आप पुणे, मुंबई, बेंगलोर में जाके भी एक्चुरियल मैथमेटिक्स के प्रॉपर क्लासेस ले सकते हो, एंड देन यू कैन बी दैट. Okay, so set up your goals and then you can have a good life. Okay. और ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पैसा ही कमाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा मकसद ऐसा भी नहीं है, बट यू शुड हॅव दॅट मच अमाउंट ऑफ मनी. जितना गरजेपेक्षा थोडा जास्त असेल तर ठीक आहे, दॅट इज ऑल्सो सफिशियंट. बरोबर ना? Yes, ma'am. ऐसा मेरा मानना नहीं है कि आपको सिर्फ पैसे पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है. हाँ, आपका एक स्टेटस भी होना चाहिए, आपको लोगों की मदद भी करना चाहिए,
जस्ट लाइक लोगों की मदद इन द सेंस पैसे कमा के फ्रेंड्स को दे दो, ऐसा नहीं। आपको पैसे कमा के उसी पर्सन को देना चाहिए, हाँ, जो जो नीडी है, हाँ, सिरियसली इसको मदद करने की जरूरत है, उसको ही देना चाहिए, राइट। एंड गरजेपेक्षा थोडा जास्त असेल तर that is also okay for us. Okay, so let us stop here, and in the next lecture we will start with some of the basic concepts in the differential geometry, that is straight line in 2D, in 3D space, and what is some of the basic concepts of plane, and how to find out the equation of a plane, like this. Okay. मैम, वो प्रोजेक्ट का आप लोग हमें ग्रुप करके देने वाले, क्या हम खुद चुने, मतलब स्टूडेंट्स?